and today I will be discussing about sepsis and septic shock. I do not have any financial disclosures. So objectives of our discussion will be definition of sepsis and septic shock, what is Phoenix sepsis score, how we can recognize and investigate patients with sepsis, what will be our management plan, inotropic selection, and supportive care and therapeutic endpoints in patients with sepsis or septic shock. So starting with a clinical case scenario, a 4-year-old boy who presented to the ER with a complaint of fever, difficulty in breathing for last 2 days, and he is now dull and drowsy. His heart rate is 160 per minute and respiratory rate is 50 per minute. Blood pressures are 70 by 25 millimeter of mercury. He has temperature of 38.5. He has normal volume pulses and a normal CRT with a GCS of 10 by 15, and on examination he has bilateral crackles on auscultation. So what is our assessment? A patient with fever and difficulty in breathing who is now dull and drowsy with tachycardia, tachypnea and low blood pressure, and he is also febrile with low GCS and bilateral crackles, can be considered as sepsis or not, and what are the prominent indicators which will help us in guiding that this patient is in sepsis or in severe sepsis or in septic shock. So we will be discussing about it in this presentation. So starting from the first definition of sepsis, which came out in 2005. So in 2005, there was a definition which we all know about, which is known as SIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. So systemic inflammatory response syndrome comprises of 4 main components. First is temperature, then tachycardia, tachypnea and leukocyte count. तो अगर हमारे पास 2 या more than 2 components present होते हैं, then we can label this patient as having SIRS response. 2005 में इंटरनेशनल पीडियाट्रिक सेप्सिस कंसेंसस कॉन्फ्रेंस ने ये डेफिनेशन दी थी फॉर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन टू डिफाइन सेप्सिस एंड ऑर्गन डिसफंक्शन. मेनली अगर पेशेंट को टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है अकॉर्डिंग टू देयर एज, टेम्परेचर में दे हैव हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, or they have tachypnea according to the age based respiratory rate, and if they have high or low leukocyte count, then they have a SIRS response. Then there is a definition of sepsis. In sepsis, the patient have 2 components of SIRS with suspected or confirmed infection. In severe sepsis, patient has sepsis with signs of end organ dysfunction. And in septic shock, patient has severe sepsis with cardiovascular dysfunction or arterial hypotension despite fluid resuscitation. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ चाइल्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन ICU who is 2 years old. He has fever, he has respiratory distress because of bronchiolitis. His X-ray showed that he has hyperinflated lungs. अब इसके अंदर अगर हम SIRS की बात करें तो he has fever and he has tachypnea, then इसको SIRS response है और इसको हम sepsis कहेंगे. अब इसके अंदर then should we start IV antibiotics for a patient who has bronchiolitis? Should we give inotropes? What should we do in this scenario? जबकि ये patient हमारे पास bronchiolitis के साथ आया लेकिन इसका SIRS स्कोर पॉजिटिव है. और इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक पेशेंट आया है जो कि 2 months old है एंड द पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि पेशेंट इज dull lethargic and has inability to take feed for last few days. अब उस पेशेंट को जिसको फीडिंग डिफ़िकल्टी हो रही है और वो डल लेथार्जिक है, इस केस सिनेरियो के अंदर he is not fitting in the criteria of SIRS. He does not have temperature, tachycardia, tachypnea और leukocyte count issues. क्या हम इसको कहेंगे कि इस पेशेंट को सेप्सिस नहीं है? So because of this,
हमें अपनी डेफिनेशन को रिवाइज करने की नीड थी, बिकॉज इसमें कुछ पेशेंट्स हमारे मिस हो रहे थे सेप्सिस में और कुछ पेशेंट्स हम इंक्लूड कर रहे थे एंड दे डू नॉट हैव सेप्सिस. सो हम लोगों के पास कोई पेशेंट आए, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कंसीडर करते हैं एक पेशेंट है विद न्यूमोनिया और बैक्टीरियल सेप्सिस और डेंगू और मिक्स्ड इन्फेक्शंस. किसी भी इन्फेक्शन के साथ जब कोई पेशेंट आता है, देन what is the cycle which will lead to end organ perfusion? They can have anemia, they can have thrombosis, they can have bleeding. Different pathophysiology contribute to these mechanisms. Some patients have myocardial depression and some patients have endothelial dysfunction. यानी उनकी कैपिलरी लीकी हो जाती हैं और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड आपका लीक होके एक्स्ट्रा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कैन हैव एडिमा और आपकी परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है बिकॉज आपके इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीटेड होते हैं ये पेशेंट्स, विच कैन फर्दर लीड टू फेलियर ऑफ ऑर्गन परफ्यूजन. सो इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली इट स्टार्ट विद सर्ज रिस्पॉन्स एंड देन दिस लीड्स टू सेप्सिस एंड देन सेप्टिक शॉक. सो जैसे जैसे आप इस साइकिल में या इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन करते जाएंगे वैसे ही आपके पेशेंट के लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल डिक्रीज होते जाते हैं एज इट इज़ शोन इन दिस सेकेंड ग्राफ. तो जैसे जैसे आप सेप्सिस से सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहे हैं आपका लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल डिक्रीज होता जा रहा है. अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेप्सिस और इंटरवेंशन. तो सेप्सिस के पेशेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किस पॉइंट पे इंटरवीन कर रहे हैं. अर्ली रिकग्निशन एंड इंटरवेंशन विल बी हेल्पफुल इन बेटर आउटकम्स. सो फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली पेशेंट को असेस किया. फॉर एग्जांपल जो हमने इनिशियली एक केस डिस्कस किया था इन आवर सेकेंड स्लाइड, जिसके अंदर हमारा जो पेशेंट है उसको फीवर था, टेकिपनिया था, टेकिकार्डिया था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था. After initial assessment, we need to identify, mitigate and escalate our care. At this point in time, अगर हम अपनी identification के through early escalation of therapy करेंगे तो there is expected recovery chances और वो भी quickly as compared to later on. Then अगर हम escalation of patient care within next few hours करते हैं, that is EOPC score, which is if it is in between 4 to 6, then इसमें भी हमारे पास expected recovery के chances are more than if we do it later when we are going to call ICU or we have started CPR. तो जितना हम डिले करते जाएंगे पेशेंट की रिकग्निशन में और अगर वो सेप्सिस से सेप्टिक शॉक में जाएगा और सेप्टिक शॉक से मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में जाएगा उतना ही रिकवरी का चांस कम होता जाएगा और उतना ही डिले होगा पेशेंट की रिकवरी के अंदर भी अगर पेशेंट रिकवर होता है. सो इसी क्राइटेरिया से जो हमारे पास अभी हमने इंटरनेशनल पीडियाट्रिक सेप्सिस कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस का क्राइटेरिया डिस्कस किया था, दे हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गन डिस्फंक्शन क्राइटेरिया. Because sepsis will lead to septic shock and septic shock will then end up in organ dysfunction. Organ dysfunction में we have a cardiovascular criteria, respiratory criteria, neurologic criteria, hematologic criteria, renal and hepatic. So cardiovascular में अगर हम लोगों ने किसी पेशेंट को 40 ml per kg से fluid boluses दिए हैं लेकिन despite that patient has low blood pressure, need of vasopressor or delayed capillary refill time, lactate is high, base deficit is more than 5, patient has low urine output. So that means that patient has cardiovascular dysfunction. Similarly, in respiratory system, we have PF ratio, PCO2s and FiO2 or need of invasive or non-invasive mechanical ventilation. In neurological criteria, if the patient has GCS of less than 11 or acute change in GCS for more than 3 from baseline, this shows that patient has neurologic dysfunction. And in hematologic, patient's platelet count of less than 80,000 or a decline of more than 50% or a INR of more than 2 indicates hematological dysfunction. Renal में we will look for creatinine
and as well as urine output can help us out for renal dysfunction. And in hepatic, if bilirubin is more than 78 and AST-ALT ratio is 2 times the upper limit of normal. So these are 8 specific vital signs which we see when we are considering that patient is tachypneic, tachycardic or bradycardic, and we all should know about this. So now coming towards sepsis 3 score, as we have already discussed कि हम लोगों ने इंटरनेशनल पीडियाट्रिक सेप्सिस कॉन्सेंसस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सर्स स्कोर आइडेंटिफाई किया था उसके अंदर हमारे कुछ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन who have sepsis were missed, और जिनके पास कुछ के पेशेंट्स के पास सेप्सिस नहीं भी था बट अगर वो सर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सेप्सिस में कंसीडर हो रहे थे तो वी वर ओवर ट्रीटिंग देम. इस वजह से some people thought of finding a new score that was sepsis 3 or SOFA score. It's a pretty known score और काफ़ी लोगों को इसका आइडिया है, लेकिन इसमें इशू ये था कि ये सिर्फ एडल्ट्स के अंदर वैलिडेट हुआ था, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में वैलिडेट नहीं हुआ था, और ये हाई रिसोर्स कंट्री की बेसिस पर ही डिज़ाइन किया था. तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया और चीज़ें ऐसी थी जो हाई रिसोर्स कंट्री में तो इम्प्लीमेंट हो सकती थी, लेकिन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर देयर वर डिफ़िकल्ट and some issues to implement them, some logistic issues. अगर आपको किसी पेशेंट की लेक्टेट लेवल को चेक करना है और लेक्टेट आपके पास सिस्टम में हो नहीं रहा तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि इज़ देयर अ डिस्फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नॉट. तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे. सो सोफा स्कोर को इस वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. वैलिडेट भी नहीं था और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर पहले ये डिज़ाइन भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ था. सो इसमें भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिवर, रीनल, कोगुलेशन एंड न्यूरोलॉजिक सिस्टम सारे इन्वॉल्व थे और उनको डिफरेंट स्कोर्स की बेसिस पे डिवाइड किया हुआ था फॉर स्कोर 0, 1, 2, 3 एंड 4, जस्ट लाइक वी डिड इन ऑर्गन डिस्फंक्शन स्कोर. बट अब इसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट ऐसे हैं जो कि वी विल बी डिस्कसिंग इन फीनिक्स सेप्सिस स्कोर. सो इस स्कोर को भी लेटर ऑन उन्होंने चेंज किया बिकॉज दे रियलाइज्ड कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए ये ठीक नहीं है. एंड देन देयर वाज टाइम वेयर पीडियाट्रिक सेप्टिक शॉक कोलैबोरेटिव ट्रायज ट्रिगर टूल केम इन 2017. So patient who presented in ED with concern of infection or temperature abnormality, उनके लिए हमने एक triage assessment tool बनाया था जिसके अंदर we initially obtain their vital sign which include blood pressure and temperature. We perform a brief history and physical examination to assess their mental status, skin, pulses and capillary refill. So then, is the patient was included in a high-risk population or not? High-risk population कौन सी होगी वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे. Who are immunocompromised, have asthenia, they are CP child or mentally retarded child. तो बहुत सारे और they have some oncological issues. तो ये सब हमारे पास high-risk patient होते हैं. उसमें हम septic shock checklist implement करते हैं, which include temperature abnormality, hypotension, tachycardia, tachypnea, capillary refill abnormality, mental status abnormality, pulse abnormality and skin abnormality. So if the patient is hypotensive or not, अगर hypotensive है तो हम अपना septic shock protocol apply करेंगे, और अगर patient is not hypotensive, does patient meet 3 or more of the 8 clinical criteria? If yes, then identify the patient as meeting septic shock triage criteria and transfer to room immediately and alert physician. Then does physician assessment concur with triage assessment? Yes, then we will mobilize our resources and start managing patient as he or she has sepsis. But if no, then we will continue with routine care. So why there is the need for a scoring system? Because अब तक हम लोगों ने sepsis 3 score, that is SOFA score डिस्कस किया, SIRS score डिस्कस किया, और हम अभी भी परेशान है कि पेशेंट के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है और we still need a pediatric scoring system to identify sepsis. Because to assess whether this patient has sepsis or not, हमें ये आइडेंटिफाई करने की नीड है कि इस पेशेंट को एक्चुअली सेप्सिस है या नहीं,
to get help in early recognition of sepsis. अगर हम अर्ली रिकग्नाइज कर लेंगे सेप्सिस को, तो जो हमारी साइकिल है जिसमें जितना डिले होता जाएगा सेप्सिस आइडेंटिफिकेशन में, अगर पेशेंट पे कोड ब्लू हो रहा है, अगर हम आईसीयू को इन्वॉल्व करें, दैट मीन्स कि देयर इज सम डिले इन आइडेंटिफाइंग दिस पेशेंट, और जितना डिले करेंगे उसमें रिकवरी के चांसेस भी कम होंगे और टाइम ऑफ रिकवरी भी लंबा होता जाएगा. So to evaluate the patient's risk for adverse outcome and to diagnose and plan management. So then comes the Phoenix Sepsis Score, which came to be released in 2024 actually. इसमें भी हम लोगों ने Phoenix Sepsis Score के अंदर system based ही scoring की है to identify organ dysfunction because of sepsis. So there is respiratory system, cardiovascular system, coagulation system, neurologic system. लेकिन इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था कि हमारे पास जितने पेशेंट्स थे, हमें ये देखना था कि अगर हम हायर मिडिल इनकम कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को भी उसी तरह से केटर करें, उसी तरह से कवर करें अगर यहाँ के पेशेंट्स को सेप्सिस हो रहा है. तो हम लोगों ने इसमें कुछ इस तरह के टेस्ट ऐड किए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पेशेंट का लैक्टेट हम परफॉर्म कर सकते हैं तो वी विल स्कोर दिस पेशेंट फॉर लेस देन 5 millimole per liter of lactate, score 0, and if there is a lactate of 5 to 10 then we will score 1, and if the lactate is more than 11 we will score 2. लेकिन इसमें द गुड पॉइंट वॉज कि अगर किसी भी एरिया के अंदर लैक्टेट परफॉर्म नहीं भी हो रहा, देन हम लोग उस एरिया के अंदर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेजो एक्टिव मेडिकेशंस और ब्लड प्रेशर सिंपली हम किसी भी एरिया में परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो एक बेसिक हेल्थ केयर यूनिट ही ना हो, तो वहाँ पे भी आपके पास ब्लड प्रेशर परफॉर्म हो रहा होगा. तो अगर हम लोग वहाँ पे किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कर सकते हैं तो on the basis of only blood pressure we can decide कि patient has cardiovascular dysfunction or not. तो ये Phoenix Sepsis Score ने help किया कि उसने overall जब अपना score डिज़ाइन किया तो they included lower middle income countries as well as higher income countries. और score को they kept as simple as possible. और फॉर एग्जांपल, जब हम लोग किसी पेशेंट को एपिनेफ्रीन या नॉरएपिनेफ्रीन आईसीयू या ईडी में दे रहे होते हैं तो कंटिन्यूस स्कोरिंग नहीं हो रही होती कि अभी एपी 0.1 पे है, फिर 0.15 पे हो गई, फिर 0.12 पे हो गई, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं. इस वजह से इसमें इन लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए डायरेक्ट मेंशन कर दिया नो वेजो एक्टिव मेडिकेशन, 1 वेजो एक्टिव मेडिकेशन एंड 2 वेजो एक्टिव मेडिकेशन. तो आपको डोज बताने की भी नीड नहीं है. For respiratory system, they have divided into a PF ratio and SF ratio. So, for example, a PF ratio के लिए we look for PaO2s and FiO2. तो PaO2s के लिए we need arterial blood gas. लेकिन अब इन्होंने इसको भी simplify करने के लिए SF ratio कह दिया जिसमें oxygen saturation is enough और आपको ब्लड गैस करने की भी नीड नहीं है. और उसकी बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई कि इफ़ द SF रेशियो इज़ मोर देन 292 द पॉइंट इज़ 0, इफ़ SF रेशियो इज़ लेस देन 292 एंड द पेशेंट इज़ ऑन एनी रेस्पिरेटरी सपोर्ट द स्कोर इज़ 1, and if the SF ratio is 148 to 220 and patient is on invasive mechanical ventilation, the point is 2, and if the score of SF ratio is less than 148 and the patient is on intermittent mandatory ventilation, the score is 3. And blood pressures are also divided on the basis of the age of the patient. Similarly, in coagulation profile, they have checked platelets, INR, D-dimer and fibrinogen. तो कुछ एरियाज़ के अंदर डी डाइमर और फिब्रिनोजन अवेलेबल होते हैं, कुछ सेटअप्स के अंदर डी डाइमर एंड फिब्रिनोजन इज़ अवेलेबल, बट कुछ सेटअप्स के अंदर ये नहीं भी अवेलेबल होते हैं. तो दे कैन डू ऑनली प्लेटलेट और कोगुलेशन प्रोफाइल विच कैन हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट पेशेंट हैज़ कोगुलेशन डिसफंक्शन और नॉट. Neurological में they have decided to keep GCS and pupils on the basis of which we can decide that the patient has neurological dysfunction if the GCS is more than 10
and the pupils are reactive, score is 0. If GCS is less than 10, the score is 1, and then 2 points are given if the patient has fixed pupils bilaterally. So, how can we define sepsis? Sepsis is suspected infection with Phoenix sepsis score of more than 2 or more than 2. And in septic shock, sepsis with more than 1 cardiovascular point will be labeled as septic shock according to Phoenix sepsis score. So, this is the flow chart to categorize patient using Phoenix sepsis score. For example, we have a patient who is unwell and he came to us in ED or ICU. So we will initially screen him for sepsis. If sepsis is suspected, then we will assess for organ dysfunction and we will implement Phoenix sepsis score. If Phoenix sepsis score is 2 or more than 2, then we will say that this patient meets the criteria for sepsis and we will start antimicrobial therapy, organ support, and we will transfer to ICU. And if this patient has Phoenix sepsis score with cardiovascular dysfunction of more than 1, then we will label this patient as he is in septic shock. So now what is the difference between International Pediatric Sepsis Consensus Conference criteria and Phoenix sepsis criteria? उसमें हमारे पास sepsis की definition में SIRS criteria था, and with more than 2 SIRS criteria will be labeled कि patient has sepsis with suspected or confirmed infection. In Phoenix sepsis criteria, there is life-threatening organ dysfunction with more than 2 points on the Phoenix sepsis score. इस criteria में we have organ dysfunction in Phoenix pediatric sepsis criteria, which includes respiratory system, cardiovascular, coagulation, and neurologic. Severe sepsis की जो term है वो अब हम pediatric Phoenix sepsis criteria के अंदर use नहीं करते, but we used to define this as sepsis with at least one of the following, which can include cardiovascular dysfunction, respiratory dysfunction, or more than 2 other organ dysfunction. Septic shock की definition दोनों में similar है. In previous definition, in previous criteria, this was labeled as sepsis with cardiovascular organ dysfunction, and now in Phoenix pediatric sepsis criteria, this is labeled as sepsis with more than 1 point in cardiovascular system. Phoenix sepsis score की कुछ limitation है. It is intended to identify life-threatening organ dysfunction due to infection in children. So अगर किसी पेशेंट को सेप्सिस के साथ लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, then we will define that this patient has sepsis according to Phoenix sepsis criteria. But जो initial हमारे पास time period है, as we were talking about कि early recognition can help us in managing and improving outcome in these patients, वो मे बी वो वाला टाइम पीरियड हमारा डिले हो जाए इन आइडेंटिफाइंग these patients from Phoenix sepsis score. It is not designed for screening children at risk of developing sepsis or early identification. So screening के लिए हमारे लिए ये इतना हेल्पफुल नहीं होगा. जब तक organ dysfunction नहीं होगा, maybe this score cannot help us in identifying patient with sepsis and incorporation of already validated scores in children. So इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे स्कोर्स को हम लोगों ने जो प्रीवियसली वैलिडेट हो गए थे बच्चों के अंदर, उसको भी इम्प्लीमेंट और इनकॉर्पोरेट कर दिया है. फॉर एग्जांपल अभी हमने सोफा स्कोर को डिस्कस किया था कि सोफा स्कोर को हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन डिस्फंक्शंस डिस्कस हो रहे थे. उसको सोफा स्कोर के डिफरेंट ऑर्गन डिस्फंक्शंस को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, लेकिन we made it easy to implement in lower middle income countries. Then PROD score या फिर International Pediatric Sepsis Consensus Conference score या vasoinotropic score, इन सब को हम लोगों ने combine करके इस Phoenix sepsis score के अंदर incorporate कर दिया. So now coming to a septic shock checklist, जो कि अगर हमारे पास कोई patient आया है with sepsis, उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या important identifiers मिल सकते हैं to identify that this patient is in septic shock or not. It includes temperature abnormality, hypotension with the blood pressure below the 5th percentile. और वो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है where we multiply 2 with age and add 70 in it. For the patients who are in between age of 1 to 10 years, उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से and we will add 70 in it.
or for mean arterial pressure we can multiply 1.5 in age and add 40 in it. So ये हमारे पास 5th percentile शो कर देगा. तो अगर इतना हमारे पास ब्लड प्रेशर है तो इट्स ऑल राइट, हम इसको टॉलरेट करेंगे, बट बिलो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइपोटेंशन. Then comes tachycardia, capillary refill abnormality and pulse abnormality, tachypnea with increased work of breathing, skin abnormality and mental status abnormality. So we were discussing about high-risk patient, which will be including malignancy, asthenia in patients with sickle cell disease, bone marrow transplant, catheter or central or indwelling line, solid organ transplant, patients with CP child or severe mental retardation, immunodeficiency, immunocompromised or immunosuppressed patient. So now there are 3 stages of septic shock: compensated, uncompensated and irreversible. So वो patients जिनके vital organ functions remain maintained and their blood pressure is normal or increased, they have compensated shock. Children who have hypotension or hypoperfusion with organ dysfunction and abnormal lab values, for example, they have rising BUN and creatinine because of renal dysfunction, so they will be considered in uncompensated shock. And in irreversible shock, there will be failing compensatory mechanism, profound vasoconstriction, lactic acidosis, and multi-organ dysfunction syndrome. So जब भी हम सेप्सिस के पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो हेड टू एग्जामिनेशन करना होता है, बिकॉज सोर्स ऑफ सेप्सिस कैन बी एनीवेयर. There can be CNS dysfunction, cardiovascular dysfunction, renal dysfunction. इसलिए head to toe examination is very important. In CNS, these patients can be agitated, drowsy, or in coma. In cardiovascular system, they can have poor pulses, delayed capillary refill, they can have hypotension. In respiratory system, they can have acidotic breathing or altered breathing pattern. And in abdominal examination, they can have distension, tenderness, or sclerema. Then there is signs of hypoperfusion. Because sepsis के अंदर usually हमारे पास relative vasodilation होती है. Vasodilation की वजह से जो आपके intravascular volume होती है patients की, वो depleted होती है, and these patients can have signs of hypoperfusion, which can include tachycardia, diminished or absent peripheral pulses, weak central pulses, narrow pulse pressure, cold extremities with prolonged capillary refill time, decreased level of consciousness, and hypotension. तो अगर किडनीज के अंदर ब्लड परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो देयर विल बी लो यूरिन आउटपुट, और अगर brain की perfusion compromise होगी तो these patients have decreased level of consciousness, and as well as acidosis or hypotension and poor perfusion. ये सारे signs हमें मिलेंगे in the patients who have sepsis and with organ dysfunction. So lab workup. Now moving towards the lab workup, अभी हमने identify कर लिया, examine कर लिया, diagnose कर लिया कि our patient has sepsis. अब हमने उनका lab workup क्या करवाना है? We will start with CBC with differential count and peripheral film. We will do their renal function and electrolytes, CRP and procalcitonin, liver function test, PT, APDT, INR, and D-dimer, blood culture. This can also include cultures from trachea if the patient is intubated, or this can be urine culture if the patient is suspected to have urinary complaints or any issues related to kidneys. Then blood gas, lactate, mixed venous oxygen saturation, blood glucose level, blood group and cross match if patient needs transfusion, chest x-ray and bedside ultrasound. So what is central venous oxygen saturation, which we discussed while we were discussing about investigation. So हमारे पास कुछ patients जो कि sepsis के साथ आते हैं, हम उनको central line पास करते हैं, और mainly अगर हमारे पास central line internal jugular vein में होती है, उनकी हम लोग blood gases कर रहे होते हैं. उस blood gas के अंदर we have one component which is known as PaO2s. So
सेंट्रल वीनस सेचुरेशन इज़ नॉट अबाउट PaO2s। जब हम सेंट्रल वीनस सेचुरेशन की बात कर रहे होते हैं, इट इज़ मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन विच इज़ नोन एज SaO2 या SvO2। अगर हम लोग उसको आर्टीरियल गैस में देखेंगे तो वो SaO2 आता है, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100% होगी, बट इन मिक्स्ड वीनस सेचुरेशन इट इज़ नोन एज SvO2, जो कि हम लोग सेंट्रल वेन और सेंट्रल वेन की लाइन से निकाल कर सैंपल कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जितना भी हमारे पास होल बॉडी से वीनस रिटर्न आता है, वो हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर आता है, एंड देन फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड देन पल्मोनरी आर्टरी। यूजुअली हमारे पास राइट एट्रियम से SVC एंड IVC ब्लड लेकर आ रहे होते हैं, एंड देन इट गोज़ टू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। सो ट्रू मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन हमें पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पता चलती है, लेकिन क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन हम बच्चों में नहीं करते, इसलिए थ्रू इंटरनल जुगुलर वेन कैन्युलेशन, जो कि हमारे पास SVC में होगी, RA में होगी या उससे ऊपर होगी, उसके थ्रू हम परफॉर्म करते हैं, एंड इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये हमें किस तरह हेल्प करती है? सो फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो देयर इज़ 20 to 25% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द ब्लड, और हमारे पास 70% या 75% ऑक्सीजन वापस हार्ट के अंदर आती है थ्रू SVC एंड IVC। तो अगर किसी पेशेंट की मैं मिक्स वीनस चेक कर रही हूँ एंड इफ इट्स 70%, दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर हमारे पास किसी पेशेंट की ऑक्सीजन डिलीवरी इज़ इनएडिक्वेट बिकॉज ऑफ लो कार्डियक आउटपुट, तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पेशेंट को 100% सेचुरेशन 100% ऑक्सीजन दे रहे थे, बट नाउ हम उसको 70% दे रहे हैं, एंड द ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन इज़ अराउंड 25%, सो द रिटर्न बैक वुड बी अराउंड 40% या 35%। तो इस तरह से हमारी mixed venous oxygen saturation will help us in guiding the patient has cardiovascular dysfunction, low cardiac output, या फिर there can be increased demand of tissues, because sometimes in septic shock there is increased metabolic demand of tissues, इसकी वजह से भी extraction बढ़ जाती है। So assessment of perfusion, how we will assess perfusion of the patient. So there are three methods: peripheral perfusion variable, hemodynamic variable, and biochemical versus metabolic variable. So हम लोग heart rate, systolic blood pressure और shock index. Shock index means heart rate divided by systolic blood pressure. तो अगर हमारे पास shock index is less than 1, this is normal, और अगर हमारे पास shock index more than 1 है, दिस इंडिकेट्स कि पेशेंट इज़ इन सेप्टिक शॉक और वो ग्रेजुअली वर्सनिंग की तरफ जाएगा, यानी कि जितनी शॉक इंडेक्स बढ़ती जाएगी उतना आपकी पेशेंट की मोर्टेलिटी का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। फॉर हीमोडायनेमिक वेरिएबल्स वी नीड टू लुक फॉर CRT, स्किन टेम्परेचर एंड पेरिफेरल पल्सेस, एंड फॉर बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक वेरिएबल वी नीड टू assess blood gas with anion gap, lactate and mixed venous oxygen saturation. So जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है सेप्सिस का, we will assess pulses, we will assess capillary refill time, and we will assess skin temperature. In vitals, we will look for heart rate, systolic blood pressure, and shock index, and we will get his blood gas with anion gap and mixed venous saturation, and we will look for lactate if we can do that. So now हम लोगों ने पेशेंट को अर्ली रिकॉग्नाइज कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया। नाउ देयर इज़ टाइम टू मैनेज दिस पेशेंट। सो गोल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? वी नीड टू रिवर्स टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, वी नीड टू प्रिवेंट मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन एंड अर्ली एंड रैपिड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। तो की स्ट्रैटेजीज ऑफ मैनेजमेंट इज अर्ली रिकग्निशन, टाइमली एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, source control, and hemodynamic and supportive therapy. Okay, so अब हमारे पास कुछ different types of condition के साथ patient will land up.
विद सेप्सिस, यानी कि ये सारे पेशेंट्स सेप्सिस में होंगे लेकिन दे हैव सम डिफरेंट कंडीशंस, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मैनेजमेंट भी टेलर्ड होगी. फॉर एग्जांपल, इन सिचुएशन नंबर 1, अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है विद सेप्सिस और हमने उसको इनिशियली फ्लूइड बोलस दिया है 10 ml per kg से ओवर 20 minutes, then we will reassess this patient. How is the heart rate of the patient? How is his extremities? Pulses कैसे हैं? Capillary refill time कैसा है? Temperature कैसा है? Urine output कैसा है? And mental status कैसा है? अगर तो patient has narrow pulse pressure और same pulse pressure with underfilling, यानी कि हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टेटस के अंदर कोई वर्सनिंग नहीं हो रही है, कोई कैपिटेशंस नहीं मिल रही है और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी सेम है, देन वी कैन कंसीडर अबाउट मोर फ्लूइड बोलसिस. अगर फिर भी पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, पल्स प्रेशर सेम है या नैरो है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी भी अंडर फिलिंग है, यानी कि क्रेपिटेशंस नहीं मिल रहे हैं, साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड नहीं मिल रहे हैं, देन वी कैन कंसीडर अबाउट मोर फ्लूइड बोलसिस. बट कंपेयर टू दिस, इन सेकेंड सिचुएशन, अगर हमारे पास पेशेंट है विद सेप्सिस एंड उसको हमने फर्स्ट बोलस दिया एंड देन जब हमने उसको दोबारा देखा तो कंडीशन इज़ अनचेंज या कंडीशन अब बेटर हो गई है पेशेंट की. पल्स प्रेशर वाइड हो गया है विद लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अनचेंज रेस्पिरेटरी स्टेटस है, यानी कि कोई साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड नहीं मिले हैं. क्योंकि पेशेंट ने हमारे फर्स्ट फ्लूइड को रिस्पॉन्स किया है बट देयर इज वाइड पल्स प्रेशर, वी कैन कंसीडर अर्ली वेजोप्रेसर, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन. बिकॉज वाइड पल्स प्रेशर है एंड दिस पेशेंट इज इन सेप्सिस, जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट लाइकली वेजोडाइलेटेशन होती है और आपकी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीटेड पेशेंट्स होते हैं, तो इस वजह से नॉरएपिनेफ्रिन विल हेल्प दिस पेशेंट इन मेंटेनिंग इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम. तो हमने इनको वेजोप्रेसर स्टार्ट किया 0.05 to 0.1 माइक पर केजी पर मिनट से. देन वी विल रीअसेस दिस पेशेंट. अगर कंडीशन पेशेंट की अनचेंज रहती है, बेटर हो जाती है, बट स्टिल पेशेंट हैज़ वाइड पल्स प्रेशर एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम status is unchanged, then we can increase norepinephrine or we can consider vasopressin as well. In third scenario, अगर हमारे पास पेशेंट आया है and we have with the sepsis and we have given the bolus and or we have started norepinephrine infusion for hypotension and the patient's flow or perfusion is worse now, patient has vasoconstriction and the pulse pressure is same or narrow and the respiratory system is now getting worse, यानी कि signs of fluid overload मिल रहे हैं आपके, then we can consider epinephrine because patient already has poor perfusion and severe vasoconstriction. So we can start from low dose epinephrine from 0.05 to 0.1 mic per kg per minute. Then we can reassess. अगर अभी भी पेशेंट की परफ्यूजन वर्स हो रही है, पल्स प्रेशर नैरो है और रेस्पिरेटरी स्टेटस वर्स हो रहा है विद साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, वी कैन इंक्रीज inotrope epinephrine from 0.05 to 0.1 mic per kg per minute and then we can even switch to another inotrope after epinephrine has been increased to 0.1 mic per kg per minute. Okay, now this is a very small chart which summarizes the whole management we do in patients with sepsis. Initially, we will establish our IV line, we will give some oxygen support and we will recognize decreased mental status and perfusion. Initial resuscitation will be started from fluids. आपने fluid का bolus दिया, then we will correct blood sugars and we will start with antibiotics. So within 5 minutes हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होती हैं. आपने आइडेंटिफाई किया, IV एक्सेस इस्टेब्लिश किया, इनिशियल वर्कअप सेंड किया, then we will manage blood sugars, we will start with IV antibiotic and we will attach the fluid bolus as well. अब fluid refractory shock के अंदर we will immediately switch to our vasopressors which can be epinephrine or norepinephrine. And then in catecholamine resistant shock we will give hydrocortisone. अच्छा, अब इसके अंदर प्रीवियसली वी यूज टू डिस्कस दैट इन कोल्ड शॉक विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स वी विल एड vasodilator as well, which is milrinone or imrinone. And in cold shock with low blood pressure, we will consider norepinephrine or epinephrine. So mostly epinephrine is preferred in this case scenario. With sepsis के patients के अंदर आप सिर्फ
कोल्ड और वार्म पेरिफेरीज के अंदर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस पेशेंट इज़ इन कोल्ड शॉक और इन वार्म शॉक, बिकॉज समटाइम पेशेंट हैज़ पुअर परफ्यूजन and they have cold peripheries, but still patient is so much vasodilated because of sepsis that they need norepinephrine. So newer guidelines have suggested to use norepinephrine in septic shock patient as a first line agent. और वार्म शॉक के अंदर हम लोग वैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन प्रेफर कर रहे होते हैं बिकॉज वी नो कि पेशेंट इज सो मच वेजोडाइलेटेड कि नॉरएपिनेफ्रिन विल हेल्प इन vasoconstricting the vessel and maintaining intravascular volume. अच्छा, उसके बाद we will give supportive care, we will do bedside ultrasound, and we can continue their maintenance fluid, we will assess their urine output and supportive care. Okay, so for the management, as we have discussed, in 0 to 5 minutes, we will maintain the airway in sniffing position, and then we will attach oxygen according to the requirement of the patient, face mask, high flow or ventilation. We will establish IV access, we will send the labs, we will start the fluid resuscitation, begin antibiotics, and correct hypoglycemia. This should be completed in first 5 minutes. अगर हमारे पेशेंट को सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है, देयर इज desaturation, low PaO2s, then we can consider about endotracheal intubation. Initially हमने पेशेंट को फ्लूइड बोलिसिस भी दिए and the respiratory status is now getting further deteriorated, then endotracheal intubation हम प्लान कर सकते हैं. We can pre-medicate these patients with atropine from 0.02 mg per kg, or we can keep epinephrine on bedside just to be safe, because अगर sepsis की वजह से there is myocardial dysfunction, then these patients can go in arrest during intubation or during their vagal stimulation. Sedation के लिए we can use ketamine 1 mg per kg, or propofol can be avoided if there is issues of hypotension. For paralytic agent, we can use cisatracurium or rocuronium according to availability. अच्छा, अब जब हम लोग सेप्सिस की डिस्कशन कर रहे हैं एंड वी स्टार्टेड मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग सेप्सिस को अवॉइड भी कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सम इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन गाइडलाइंस which include VAP bundle, CLAPSI bundle, or CRBSI, that is CRIPSI bundle, COTI bundle, and surgical site infection bundle. तो हर इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं. अगर उन गाइडलाइंस को हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करेंगे हम, इट कैन help us in preventing these hospital-acquired infections and patients who land up in septic shock and multi-organ dysfunction. So, hand hygiene practices, vaccination, and antibiotics, stewardship is very important as well, because अगर हम लोग overuse कर रहे होंगे antibiotic का, then there will be multi-drug resistant infections और उनको treat करना और भी difficult होगा. तो इन सब की प्रिवेंशन के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अर्ली असेस करें पेशेंट्स को, आइडेंटिफाई करें इन्फेक्शन की सोर्स, और उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है. एंड एंटीबायोटिक्स जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कल्चर्स के अंदर ये ग्रोथ आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. वीन करना है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, एंड फॉलो करने हैं सारे बंडल्स विच इंक्लूड कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर रिलेटेड बंडल, एंड क्लेप्सी बंडल, एंड वेंटिलेटर associated pneumonia prevention bundle. So these bundles are very important. Now when we are discussing about fluid resuscitation, जब हम लोगों ने एक पेशेंट को देखा कि he has hypovolemia secondary to capillary leak, vasodilatation and fluid loss, isotonic crystalloid are the first line of initial fluid resuscitation. आपने स्टार्ट किया initially bolus from 10 ml per kg, and then you can go up to 40 to 60. अगर ICU या इंटेंसिव केयर सेटिंग अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल सेटअप के अंदर, देन इट्स बेटर कि आप स्टार्ट करें फ्लूइड बोलिसिस देना, और आप फिर 40 ml per kg तक वाइल असेसिंग फॉर फ्लूइड ओवरलोड आप आराम से देते जाएं.
लेकिन अगर ICU अवेलेबल नहीं है, इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम वेजोप्रेसर एंड अवॉइड फ्लूइड बोलसिस, बिकॉज अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जाएगा देन दिस कैन लीड टू फर्दर डिटोरिएशन. And after each fluid bolus, assess for improvement of perfusion, which include reversal of tachycardia, better capillary refill time, better peripheral pulses, skin temperature, decrease in shock index, normal mental status, and better urine output. And after each fluid bolus, assess for worsening tachycardia, gallop rhythm, hepatomegaly, respiratory distress, desaturation, crepitus, and increasing shock index. These all show us the signs of fluid overload. सो रिसेंटली फोकस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेशेंट्स विद सेप्टिक शॉक, बिकॉज अब हम जब पेशेंट्स को फ्लूइड देना स्टार्ट भी कर देते हैं तो समटाइम्स पेशेंट इज़ एडिमेटस बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेटेशन. ओवरऑल इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिप्लीटेड होती है, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पेशेंट के फ्लूइड ज़्यादा होता है. तो जब हम लोग पेशेंट को फ्लूइड दे भी रहे होते हैं एंड देन वी सी कि ये पेशेंट की कैपिलरीज इतनी लीकी हैं कि वो फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में रिटेन ही नहीं हो रहा, वो एडिमा पेशेंट का वर्स कर रहा है, तो इट वोंट बी वेरी मच हेल्पफुल. तो उसके लिए एंड देन अगर हम पेशेंट को फ्लूइड दिए जा रहे हैं और फॉर एग्जांपल इन पेशेंट्स विद निमोनिया क्रेपिटेशंस पहले से प्रेजेंट है, मे बी हमें क्रेपिटेशंस इतना अच्छा गाइड ना करें कि पेशेंट इज़ अंडरफिल्ड और ओवरफिल्ड, तो उसके लिए हमारे पास फोकस पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हेल्पफुल. इसमें हम IVC कोलैप्सिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और अगर हमारे पास IVC कोलैप्सिबल है मोर देन 50%, दैट मीन्स कि पेशेंट इज फ्लूइड डिप्लीटेड और आप फ्लूइड दे सकते हैं. So ultrasound group had lower frequency of fluid overload on day 3. This is a study to compare ultrasound guided clinically guided fluid management in children with septic shock. तो जब आपने IVC कोलैप्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को फ्लूइड दिया, दिस विल रिजल्ट इन लेस फ्लूइड ओवरलोड एंड शॉर्टर रिससिटेशन टाइम, बिकॉज अगर फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट चला जाएगा तो वो आपका रिससिटेशन टाइम भी और रिकवरी टाइम भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा. तो फ्लूइड बोलसिस हम लोग कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉशियसली देते हैं. पेशेंट्स हु हैव एनीमिया, सिवियर मैलन्यूट्रिशन एंड निमोनिया, they can go in fluid overload and cardiac decompensation as well. तो इनको हमें जब भी फ्लूइड देने इट विल बी बेटर कि हम इनको 10 ml per kg से भी नहीं 5 ml per kg से बोलस दें, एंड देन ग्रेजुअली रीअसेस करते हुए रिलेटेड के साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड, वी विल गिव देम फर्दर फ्लूइड्स. So we will be discussing about fluid responsiveness. Now fluid responsiveness के लिए we can have two tests, which is static test and dynamic test. तो fluid responsiveness हमें ये बताती है कि after a fluid bolus पेशेंट का कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा या नहीं. तो स्टैटिक टेस्ट के अंदर वी हैव CVP. अगर पेशेंट का CVP फॉर एग्जांपल लेस देन 3-4 है तो दैट मीन्स कि पेशेंट इज फ्लूइड डिप्लीटेड और उसको फ्लूइड की ज़रूरत है. लेकिन अगर पेशेंट की CVP 10-11 है दैट मीन्स कि पेशेंट इज प्रॉपरली फिल्ड, RA इज प्रॉपरली फिल्ड, एंड अभी पेशेंट को अगर हम ज़्यादा फ्लूइड देंगे तो दिस कैन रिजल्ट इन फ्लूइड ओवरलोड. और डायनेमिक टेस्ट में वी हैव पल्स प्रेशर वेरिएशन. इन पल्स प्रेशर वेरिएशन जैसे हमारे पास इंस्पिरेशन के अंदर पेशेंट का इंट्राथोरेसिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट का वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है. लेकिन एक्सपिरेशन हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होता है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है. तो ये जो हमारी वेरिएशन है विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अगर ये हमारे पास लेस देन 13% वेरिएशन हो रही है दैट मीन्स कि हम पेशेंट को फ्लूइड बोलसिस दे सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस इन अचीविंग अ गुड कार्डियक आउटपुट बाय फ्लूइड थेरेपी. So there are two types of fluid responses. One is fluid overload and other is fluid intolerance. So fluid overload is described as a patient who develops respiratory deterioration when too much fluid is administered. And in fluid intolerance, there is severe capillary leak state with respiratory status deterioration, and that may occur even when the patient is still hypovolemic.
सो आफ्टर 15 मिनट्स अगर हमने पेशेंट्स को फ्लूइड दिए हैं और फिर भी पेशेंट इज स्टिल इन शॉक, ब्लड प्रेशर्स आर नॉट इम्प्रूविंग, हीमोडायनेमिक्स आर नॉट इम्प्रूविंग, then we can label this as fluid refractory septic shock, and then हम लोग inotropes की तरफ जा सकते हैं. We can go for invasive blood pressure monitoring and there is need for central access. अच्छा, अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जब हम आइनोट्रोप्स या वेसोप्रेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं. तो व्हाट डज दिस मीन? आइनोट्रोप्स मीन्स दैट दिस ड्रग विल इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल. Chronotropy means that this will increase heart rate. Lucitropy means that this drug will help in diastolic relaxation and which will improve cardiac filling. Vasoactive drugs will cause constriction of arteries. Vasodilator drugs will help in dilatation of arteries, and inodilator will increase contractility and dilate vessels. So previously we have discussed that we have 3 types of shock, that is cold shock with normal blood pressure, cold shock with low blood pressure, and warm shock with low blood pressures. So as I have already mentioned, they do not use bedside clinical signs in isolation to categorize septic shock in children as warm or cold. Use advanced hemodynamic variable when available, in addition to bedside clinical variable to guide the resuscitation of children with septic shock. So हम लोग सिर्फ cold और warm की basis पे लेबल नहीं कर सकते shock को. It's very important कि हम लोग बाकी hemodynamic variables को भी देखें. Sometimes patient is cold but they have vasodilatation, they have depleted इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, और उस कंडीशन के अंदर अगर हम उन्हें लो डोज एपिनेफ्रीन स्टार्ट कर देंगे तो लो डोज एपिनेफ्रीन विल कॉज फर्दर vasodilation and it will further deteriorate patient's condition. So use epinephrine or norepinephrine rather dopamine in children with septic shock. पहले हम लोग डोपामीन भी एक्सेसिवली यूज़ करते थे, बट डोपामीन कॉजेस मोर टेकियोरिथमियास, एंड जो हम लोगों के पास प्रीवियसली कॉन्सेप्ट था कि डोपामीन कॉजेस इम्प्रूव रीनल फंक्शन. सो जितनी भी हमारे पास स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया है कि दैट्स नॉट द केस, एंड डोपामीन इज़ नाउ बीइंग dopamine is not being recommended for use in patients with septic shock. So ये हमारा एक सिंपल सा चार्ट है which can help you in guiding कि कौन सा जो हमारा एजेंट है वो किस चैनल पे एक्ट करके क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. So we all should know about this. Now, what are the factors which causes reduced effectiveness of inotropes? So, कुछ patients जिनके अंदर acidosis होता है, which can be metabolic acidosis and respiratory acidosis, it can reduce sensitivity to calcium and reduce number of receptors and reduce CAMP, which can help in action of inotropes. So अगर हमारे पास एसिडोसिस है और हमारे inotropes वर्क नहीं कर रहे हैं तो पहले हमें एसिडोसिस को करेक्ट करना होगा, then our inotropes can start working on a patient. Hypoxia and hypocalcemia has similar issue. अगर हमारे पास पेशेंट को हाइपोक्सिया है या हाइपोकैल्सीमिया तब भी हमारे आइनोट्रोप्स नहीं वर्क करेंगे, इसलिए पहले इन कॉजेज़ को करेक्ट करना है, देन आवर आइनोट्रोप्स विल स्टार्ट वर्किंग. अगर हमने पेशेंट को आइनोट्रोप्स दिए हैं, स्टिल द पेशेंट इज़ इन शॉक, देन दिस इज़ नोन एज कैटेकोलामीन रेजिस्टेंट शॉक, एंड इस केस में हम हाइड्रोकॉर्टिसोन स्टार्ट करते हैं विद अ डोज ऑफ 2 mg per kg per dose bolus, and then maintenance dose of 0.5 mg per kg per dose Q6 hourly for 48 hours. The child is not responding. We will give this to the child who is not responding to vasoactive drug and the child who has been on steroid for a long time because of underlying adrenal insufficiency. तो अगर कोई पेशेंट है जो कि स्टीरॉइड्स पहले से ले रहा था, नाउ ही इज़ इन शॉक, तो इसकी स्टीरॉइड की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी एंड वी नीड टू गिव देम increased dose of hydrocortisone and in case of purpura fulminans. Then discussing about broad spectrum antibiotic which must be administered within 1 hour, and vigilant and judicious use of antibiotics is necessary. So age related, site of infection related, institution related, वहाँ पे कौन सी antibiotics का use common है,
कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कॉमन है, एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हम एंटीबायोटिक्स डिसाइड करते हैं. वी विल स्टार्ट विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, and once the sensitivities are available, therapy should be narrowed. Determine the duration of antimicrobial therapy according to the site of infection, microbial etiology, response to treatment, and ability to achieve source control. Appropriate selection, appropriate dose, de-escalation, and then monitoring of these patients who are on antibiotics. So then comes blood product transfusion. So usually हम septic shock के patients के अंदर blood transfusion बहुत cautiously कर रहे होते हैं. And if these patient has hemoglobin of around 10, then it's all right. Even if these patient have hemoglobin of 8 or 9 and they are maintaining their hemodynamics, then there is no need of blood product transfusion. So mainly हमारा criteria होता है to keep them more than 7, and in patients with multi-organ dysfunction syndrome, अगर हमें लग रहा है कि उनकी low mixed venous saturation आ रही है and they have some hemodynamic instability, tachycardia, then we can plan or consider blood product transfusion. Otherwise, hemoglobin of around 7 is completely normal. For FFP transfusion, if the patient has active bleeding, some invasive procedure, or before surgery, we can transfuse FFP. Otherwise, these patients can be coagulopathic, they can have deranged INR, they can have deranged PTA-PTT, and it's okay. For platelet transfusion, if the patient has platelets of less than 10,000 and there is no bleeding, then we can transfuse platelet. If these patients have platelet of more than 50,000 and we are going for an invasive procedure, or we are going for surgery, then for invasive procedure, we need to keep platelets of more than 50,000, and for surgery, we need to keep platelets of more than 1,000. IVIG is not recommended in children with septic shock, and exception is toxic shock syndrome and immunodeficiency. So these patients are at high risk of hypoglycemia, and we need to give them high or a good GIR. And if these patients have hypoglycemia, we can give them a 10% dextrose water bolus from IV or ioline, that is 4 ml per kg. It is not recommended to withhold enteral feeding solely based on vasoactive inotropic medication administration. So if a patient is on epinephrine and norepinephrine, this is not the reason to hold the feeding of a child. And enteral nutrition is the preferred method of feeding over parenteral nutrition in children with septic shock or sepsis-associated organ dysfunction. A routine measurement of gastric residual volume, that means NG aspirate in children with septic shock, is not recommended, and correct electrolyte imbalances, which includes hypocalcemia as well, so our inotropes can work properly. Okay, then comes organ support. So it is very important कि हम इन patients का GCS assess करें before starting these patients on any sedation or relaxation medication. तो पहले एक proper neurological examination करना है to assess for the focus of infection, and then there should be prompt oxygen delivery, resuscitation to maintain hemodynamics. And steroids can be also used in these patients as well for sepsis-induced encephalopathy. For cardiomyopathy, these patients can have diminished ejection fraction and dilated left ventricle. And if there is failure of the treatment from fluids to maintain the perfusion, we can escalate inotropes and norepinephrine being our first choice. In sepsis-induced liver dysfunction, these patients can have hepatitis, cholestasis, coagulopathies. So extreme caution is necessary using hepatotoxic medication and rigorous glucose monitoring with good GIR. Then for sepsis-induced lung dysfunction, the lungs are the primary site of disease leading to sepsis, often resulting in acute respiratory distress syndrome, that is ARDS. So there should be cautious use of blood product, as we have discussed previously, and lung protective ventilation strategies. For sepsis-induced renal dysfunction, these patients can have AKI, so promptly restore the volume and prevent fluid overload with diuretics, maintain hemodynamics and avoid nephrotoxic agents and IV contrast.
An early renal replacement therapy, that is CRRT or hemodialysis, can be beneficial in these patients. And for hematological manifestation, as we have discussed, prophylactic platelet and coagulation factor correction is not recommended. And in case of significant derangement of PT, APTT, severe hemorrhage, or a fibrinogen level of below 50, these patients can be transfused. So dose of sepsis and septic shock, we can resuscitate these patients with fluid, but avoid fluid overload, which will increase morbidity and mortality. Vasopressors can be given through peripheral IV lines. जब तक आपका central line maintain नहीं हो रहा, you can give vasopressors through peripheral IV line, which includes epinephrine and norepinephrine both. Then up to the dose of 0.2 to 0.3 mics per kg per minute, you can give it. Then epinephrine versus norepinephrine, which is the better choice. So norepinephrine can improve vascular tone and thereby diastolic blood pressure and mean arterial pressure, which will increase venous return, myocardial contractility, and improve ventricular arterial coupling, which will help sustain cardiac output and tissue perfusion. एपिनेफ्रीन के साथ थोड़ा सा इशू ये होता है, हम एपिनेफ्रीन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स it can cause tachycardia, and which will worsen myocardial oxygen demand, and it will cause further myocardial injury. Okay, now coming to don'ts of sepsis and septic shock. So don't wait for hypotension for the treatment of shock. Hypotension हमेशा last में आती है, और उससे पहले there are multiple signs which can help us in early recognition of sepsis. Don't delay in antibiotics and prompt source control. बहुत सारे पेशेंट्स को फॉर एग्जांपल इंट्राक्रेनियल एब्सेस है, नी जॉइंट के अंदर कलेक्शन है, गेट रिड ऑफ इट, उसको इनिशियली मैनेज करना है एंड अलॉन्ग विद द सपोर्टिव केयर एंड एंटीबायोटिक्स. अगर हमारी सोर्स कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगी, देन सेप्सिस विल नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट गिविंग ऑल सपोर्टिव केयर. Hyperlactatemia may have other causes other than hypoperfusion. So lactate level can be high despite patient have adequate perfusion. तो hypoperfusion की वजह से सिर्फ lactate नहीं बढ़ता, और भी वजह होती हैं. So isolated hyperlactatemia should not be aggressively treated but carefully monitored. And don't focus on one number. हमेशा हर चीज़ को serially monitor करना है. If there is tachycardia, monitor it serially. If there is hypotension, monitor it serially. If there is increased lactate level, monitor it serially. So what are therapeutic endpoints? हमारा पेशेंट अब सेप्सिस से निकल आया है या उसका सेप्सिस इम्प्रूव हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? With normal volume pulses, warm peripheries, capillary refill time of less than 2 seconds, normal mental status, urine output of more than 1 ml per kg per hour, a normal heart rate and blood pressure for age, a central venous oxygen saturation of more than 70%, considering keeping hemoglobin of more than 10, and even 7 to 10 is completely all right. And lactate trend. अगर lactate हमारा downward trend पे जा रहा है, this is a good sign कि patient is getting better. Thank you so much, and hope you have got some idea regarding recognition and management of sepsis.